So we kick off with a chapter on cost ledger accounting and reconciliation. A wonderful chapter. Listen up. Let me introduce a background to the chapter so that concepts become very much clear. Just now I said in the morning that business entities do need to maintain books of accounts, I go to MCA's website and you will understand why are we learning this chapter. If I take up the Companies Act 2013, kindly keep quiet. I take up Companies Act 2013. Every business entity maintains financial accounts. Financial accounts basically are used by the external users to understand financial position and the results of a business entity. However, financial statements do not give a understanding of cost of the goods produced or the cost of the services that are rendered by a business entity, and that is where a concept of cost audit and cost accounting records comes into picture. So let me take you down to company law. Just a second. Is it reflecting there today? Section number 148 of the Companies Act 2013. This section makes it important for purpose of Act. Section 148. Notwithstanding, Section 148 title, Central Government to specify audit of items of a cost in respect of certain companies. 148 says, notwithstanding anything contained in this chapter, the central government may, by order in respect of such class of companies, engage in the production of such goods or providing such services as may be prescribed, direct that the particulars relating to the utilization of material or labor or other items of cost as may be prescribed shall also be included in the books of accounts to be kept by the company or by that class of companies. Provided that central government, before issuing such order in respect of any class of companies, shall consult regulatory body constituted or established under that act. So, central government is going to notify the rules. Government has already notified the rules. So, as on today, certain industries like telecom, like cement industry, like power manufacturing, power generation, they are mandatorily supposed to maintain certain records regarding material cost, labor cost, overhead cost, and they are supposed to prepare certain reports. Now, to do all that reporting and to prepare all such reports and get these reports audited by a cost accountant in a country, you do need lot of
resources, or you do need a particular methodology to be followed in maintaining books of accounts. And that is what we are going to understand briefly in this particular chapter. So, to cover up the concept, I'll simply say as under. Books of accounts I can divide into two parts. Books of account I can divide into two parts. Which two parts? I can take financial books and I can take costing books. Listen up to the concept. Financial books ultimately contain P&L and balance sheet, or ultimately generate P&L and balance sheet. So, financial books primarily talk about external financial reporting. Costing books basically give you a detailed idea of cost of production. Let me introduce this through a very simple example. Mr. Sringar Pure, who's working with the Finolex cables, he was a cost accountant come engineer. He had introduced this concept to me. He works with the Larsen & Toubro now. You purchase raw material. What journal entry do you pass for procurement of raw material in your financial books? Purchases account debit to supplier account or purchases account debit to bank account. As simple as that. एक entry में आप काम खत्म कर देते हो. Your financial books don't tell you how much is a purchase for optic fiber cable, how much is a purchase for automobile cables, how much is a purchase for house guard cable, how much is a purchase for telecommunication cable. Purchases on category by category basis are not informed to you by your financial statements. It's a significant limitation of your financial statements. They suffer because of this limitation. They don't tell you the complete breakup of your cost. You miss certain things in your financial statement. So that's why Sringarpur said, if you would like to calculate how much is the consumption of material with respect to a particular category of finished goods, the financial books of account will not tell you that. Because आपने एक ही entry pass किया है. But as a businessman, as a management accountant, as a regulatory body, I would like to know कि optic fiber का cost कितना है. Am I making loss on optic fiber or am I making a loss on, let's say, telecommunication cables? What kind of cables am I making loss? Or what kind of cables are contributing more to my bottom line and more to my top line? So, if I tomorrow know that optic fiber is generating too much of profit for the business, why not I change a product mix? Product mix matlab, instead of selling more of LAN cable or instead of selling more of automobile cable, I can shift to the optic fiber cable. तो अगर मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है मार्केट में, तो मैं उस प्रोडक्ट का सेल्स मार्केट में ज्यादा करूंगा. ये समझने के लिए आपको फाइनेंशियल बुक्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है. योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स do not provide you information or insight into your internal business. Who gives you that insight? That insight is given to you by costing books. Now, costing books are not mandatory for all. This is mandatory for companies prescribed under section 148. Only those companies which are prescribed under section 148 to the Act, they are supposed to maintain costing books. No one else is supposed to maintain the costing books. Do you agree with me? Do you agree? Costing books are mandatory only for those companies which are prescribed under section 148 to the Act, not to other companies. And they are supposed to maintain
certain records called as a cost records. Cost records are to be maintained by these companies. Do you agree? Yes, no? Good. So now these companies will maintain cost records, but they have two methods of maintaining costing books. You have to maintain costing books, but दो options है आपके पास. Which are the two options? Integrated books, non-integrated books. Integrated books मतलब you will have same set of books of accounts for what? Costing as well as financial accounting. So costing as well as financial accounting both will be covered under same set of books. So you'll have merged two things. We'll merge costing books and what? Financial books. Both put together will have this thing. Oh, dash should not be there. Dash should be here. Costing and financial books will be integrated with each other. This means that for the purpose of financial accounting, we'll have certain accounts, ledger accounts. For cost accounting also, we'll give certain additional ledger accounts. This is khichdi. Mixing. I will come down to khichdi little later. Let us have dal chawal separately. In non-integrated books, your costing books and financial books are kept to be separate, and that's why we require reconciliation. We require reconciliation of cost accounting books and financial accounting books. When do you need a reconciliation? If you have kept costing books and financial accounting books to be separate. You need reconciliation because the profit as shown by costing books and profit as shown by your financial books is going to be different. और ये different profit का आपको जुगाड़ करना है, एक साथ mix करना है. समझा आपको? So first, let me explain you non-integrated accounting. Then I'll come down to integrated accounting. The theme here is cost sheet. Just like you presented a cost sheet in which you presented direct cost first and then you presented indirect cost. Same thing we are going to do through ledger accounts. We'll have first ledger accounts relating to direct costs. Then we'll take a ledger accounts relating to indirect cost, and thereby we'll try to arrive at cost of production. Thereby we'll try to arrive at amount of profit or amount of loss as the case may be. So what was your cost sheet? Let me just take you to cost sheet first, because for your information, if possible, I'll take one sum wherein I'll draw the accounts, I'll draw the cost sheet, and you'll come to know that the answer is same. Whatever you are doing in the cost ledger accounting chapter is exactly same as what you are doing in the cost sheet chapter. Presentation का तरीका सिर्फ अलग होता है. हाँ, but in a cost sheet chapter, you did not learn under absorption or over absorption. Initially in the first chapter, you would not have done under or over absorption at all. So cost sheet was just presentation of cost. Here, it is the same presentation of cost but with lot of ledger accounts and lot of advanced transactions. तो मैं पहले आपको बेसिक कॉस्ट शीट बोलता हूँ, फिर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का पूरा फ्लो बोलता हूँ, फिर इंटीग्रेटेड का फ्लो बोलता हूँ. मामा चगर खेलेंगे हम, बोलता हूँ आपको क्या है, एंड देन अरे बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. And then I'll teach you reconciliation, and if possible I'll take one sum which will prove you that this chapter is old wine in new bottle. So what do you take in a cost sheet? बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा? Direct material consumed. You take direct material consumed
How do you calculate direct material consumed? Opening stock of raw material plus purchases of raw material minus closing stock of raw material. Right? Opening stock plus purchases minus closing stock is called as what? Is called as direct material consumed. Then you take up what? Direct wages, direct expenses. This is known as what? Prime cost. Next, to this prime cost you add factory overheads, and here comes a new concept now which you are not done while you were doing cost sheet chapter. These overheads which you consider here are, now this is important, so let me just put a different color to this. These are factory overheads absorbed. Whatever is the amount of factory overhead absorbed, that is shown here. In the first chapter, overhead absorbed, overhead incurred, ये concept नहीं था. Overhead. Finish. ये जो होता है ये factory overhead absorbed होता है. Under or over absorption is dealt with below. So this is factory overhead. Add opening work in progress less closing work in progress. This is called as factory cost of production. ठीक है बच्चों, ये ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड है. आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? समझाता हूं, थोड़ा सा संयम रखो. Preferably I would like to take one sum on this chapter. Factory cost of goods produced. Factory cost is including factory overhead. Factory overheads are also known as works overhead. They are also known as production overhead. They are also known as factory overhead. Add admin overhead. हाँ, ये admin overheads आप ले सकते हो या नहीं? Admin overhead absorbed. जितना absorb हो वही लेते हैं. Majority of the sums you will not get a difference between overhead incurred and overhead absorbed. They overhead incurred. Overheads incurred भी word नहीं आता. Overheads. Factory overheads. Finish. अरे लेकिन वो क्या है? Overhead incurred absorbed अलग अलग होता है under absorption costing. ठीक है. ये डॉट डॉट आ गया. ये क्या है डॉट डॉट? This is cost of production, to which I add opening stock of finished goods. Therefore, cost of goods available for sale, blah blah blah. From this we deduct closing stock of finished goods, blah blah blah. Therefore I get what? Cost of goods sold. I get cost of goods sold. From this cost of goods sold, or to this cost of goods sold, we add selling and distribution overheads. Obviously, selling and distribution overheads which are absorbed. We call this as what? Cost of sales. Do you understand cost of sales? Now, आपने सिर्फ यहाँ पे add profit लिखा होगा ना? अब आएगा concept. If there is a under absorption, you add amount of under absorption to this. If it is to be transferred to costing P&L, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम के थ्रू. Under absorption, if transferred to what? Costing P&L,
ओवर एब्सॉर्प्शन है तो माइनस करो. ये अंडर एब्सॉर्प्शन ऐड क्यों किया? इट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू आर इंकर्ड बट यू आर नॉट कवर्ड अबाउ. बच्चों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन यूजिंग एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग. तो इसलिए ऊपर हमने सिर्फ क्या लिया? एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड लिया, लेकिन हमारा खर्चा और ज्यादा है. एक्चुअल कॉस्ट इज मोर. सो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इज कॉल्ड एज अंडर एब्सॉर्प्शन. ये आपको समझा होगा अभी मैं क्या किया हूं. सो दिस अंडरस्टैंड little later once I do the problem, but I just want to introduce concept right now. So under absorption, therefore over absorption minus करना है, therefore adjusted cost of sales, add profit or less loss. बच्चों, मित्रों, ये प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है. दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट. बच्चों, दिस इज प्रॉफिट एज पर cost accounting. This is not gross profit. This is net profit as per cost accounting. Now there are a lot of differences between this profit as per cost accounting and the profit that you are shown in financial accounting. इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है. वो फर्क हमें reconcile करना है. We have to find out the differences between profit as per financial accounting and profit as per cost accounting. And once we find out the differences, you will come to know that this particular statement which I have prepared and the ledger accounts that I am going to prepare here and after are one and the same. It's just a different matter of presentation. So let it be. Basically, I am talking about cost accounting books and financial books. First, we are learning non-integrated accounting, in which costing books and the financial books are kept to be separate. Now, let me talk about costing books. Financial books I am not going to talk about. It's basically your subsidiary books, ledger accounts, trial balance, and the financial statements. It's one and the same that you have done, and in your 11th standard, 12th standard, and IPCC, right? CPT also included. So whatever financial accounting you learned in CPT, IPCC and 11th, 12th is the same thing in the financial books. Costing books की बात करते हैं अभी. चलो. First core principle in costing books, nominal accounts of income expense, yes, they will be there. In costing books, personal accounts will not be there. In costing books, real account will not be there. Real account are account of assets. Personal accounts are accounts of assets, liabilities payable to the individuals or some persons. So in costing books, we will have only and only nominal accounts. But my problem is, if there are no personal and real accounts, how would you complete double entry bookkeeping effect? अगर आपको accuracy चाहिए आपके accounting process का, accuracy will be there only when there is a debit and there is a corresponding credit. Only when there is a debit and a corresponding credit, accuracy would be there in your financial accounting. It's okay. अब मुझे परचेस किया मैंने सप्लायर से, क्या एंट्री पास करते हैं आप नॉर्मली अकाउंट्स में? परचेस अकाउंटेबिलिटी सप्लायर. चलो कॉस्टिंग में परचेस की जगह पे दूसरा कोई तो अकाउंट आएगा. डेबिट का वो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज नॉमिनल अकाउंट्स आर देयर. व्हाट अबाउट अ क्रेडिट अकाउंट? मिस्टर प्रीतम फोन बाजू रख दो, नहीं तो मैं उठा के फेंक दूंगा फोन, और तेरे को भी, दोनों को साथ में फेंक दूंगा. सो क्या करोगे बच्चों आप?
personal account and real account. Do you find yourself in a trouble? Yes. Because if you have to book an expenditure, you pass an entry, purchase account debit to supplier. यहाँ पे supplier है ही नहीं. So, to maintain double entry bookkeeping system for all personal accounts and all real accounts, whenever they come in costing books, we open up an account called as General Ledger Adjustment Account or Cost Ledger Adjustment Account. बच्चों ये अकाउंट क्या है? Instead of saying debit to a personal account, we'll say debit to general ledger adjustment. Instead of saying debit to a real account, we'll say debit to cost ledger adjustment account. So this account is just a substitute of personal account and real account. तो nominal account हमारे पास रहेंगे सिर्फ बच्चों. बट यहां पर कंसेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस, वी आर गोइंग टू हैव concept of control account. What concept I said? Control account. Let me explain that concept and then the flow. Observe what I'm saying. ये आपका stores है. You have a stores. Stores में आपके पास मटेरियल A है, मटेरियल बी, मटेरियल सी, मटेरियल डी, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है. यू वुड लाइक टू प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट फॉर ईच मटेरियल. आपने अगर याद होगा आपको इन्वेंट्री मटेरियल का चैप्टर किया होगा, उसमें आपने स्टोर्स लेजर बनाया था, या सीपीटी में भी आपने स्टोर्स लेजर बनाया था. यू प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर सेपरेटली फॉर ईच मटेरियल. सो separate account is prepared. Separate account is prepared for each material. Do you agree? Separate account is prepared for each material. Now, in exam or for the sake of simplicity, we are not going to have separate account for every item of material. We are not going to have separate account for each material. हम क्या करेंगे बच्चों? एक control account बनाएंगे. That is captain account. Captain account of all the materials. What is that captain account? Instead of all the accounts, I'll have one account. Stores ledger control account. Stores ledger control account is going to be a captain account. It is going to be representative of all the material accounts. It is going to be representative of individual material. All materials put together, उनका जो representative है, that is going to be stores ledger control account. So if there is a debit to a respective material, there is going to be debit to stores ledger control account. Just like this, we will prepare representative of wages, wages control account, overhead control account. We will prepare a control account for all the expenses, admin overhead, selling and distribution overhead. So control account matlab account which is actually representing many accounts. Instead of having account of each debtor in a group 1 accounts, we had debtors ledger control account. अकाउंट्स में ग्रुप 1 अकाउंट में जब हमने सेल बैलेंसिंग का चैप्टर किया था, वहां पर हमने एक ही बुक था बट 3 लेजर्स थे. क्या क्या लेजर थे? जनरल लेजर, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर. डेटर्स लेजर में बहुत सारे डेटर्स के अकाउंट्स थे, बट इन डेटर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो हमने जनरल लेजर में ओपन किया था. जनरल लेजर में डीएलए था एंड डेटर्स लेजर में जीएलए इनटू ब्रैकेट इन डीएल. कुछ याद है क्या? सो just like that, I am opening stores ledger control account, which is basically representative of individual material. Individual ledger का representative है. ऐसे ही overheads का control account बनाएंगे.
Instead of preparing rent account, electricity account, insurance account, depreciation account, repairs account, I'll prepare one account, overhead control account. Instead of preparing hundreds of accounts for selling and distribution expenses, I'll prepare one account, selling and distribution overhead control account. Are you clear on that? Yes or no? तो ये हम कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे और इन कंट्रोल अकाउंट के थ्रू हम अकाउंटिंग करेंगे. अभी अकाउंटिंग का फ्लो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन जर्नल एंट्री एंड देन आई विल से विल प्ले मामाचे घर. ऑब्जर्व I'll take up a transaction, I'll explain journal entry and then ये सबको फ्लो समझने के लिए एक बढ़िया सा चार्ट है मेरे पास. Observe, you purchase a material, what entry do you pass? Observe, direct material और indirect material. बच्चों कोई भी टाइप का मटेरियल हो वो कहां पे आता है? What is this? Stores. I purchase a material from supplier, whether it is a direct material or it is a indirect material, it will come up in stores. Inward in stores is debit to stores ledger account. मतलब basically inventory of that particular item will go up. So what entry am I going to pass? Stores ledger control account debit to general ledger adjustment. Why to GLA? Why? Because supplier नहीं है ना मेरे पास. पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट है क्या मेरे पास? बैंक अकाउंट होता तो भी नहीं मेरे पास. नॉन इंटीग्रेटेड की बात करें ना. इंटीग्रेटेड में विल नॉट रिक्वायर जीएलए. मिस्टर मांडके एंड मिस्टर कुडाल प्लीज कीप क्वाइट एल्स यू विल बी पार्सल डाउन देयर एंड यू विल बी पार्सल टू निगड़ी. सो कॉन्सेंट्रेट. स्टोर्स लेजर अकाउंट टू जीएलए. डू यू अंडरस्टैंड दिस एंट्री? अब मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू टेक अप ऑल द ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग मटेरियल फर्स्ट, then I'm going to take a transactions of labor and so on. Purchase of material for direct use in job or process. Wait a minute. I'll come down to this transaction later. मैंने purchase किया material. कौन सा material purchase किया बच्चों? Direct या indirect? Both. It could be direct material, it could be indirect material. Now, this material I have issued, I am going by my sequence, 6 number entry, issue of direct material for production. If I issue the material for production purpose, production मतलब ये क्या है? Stores. क्या इधर? शॉप फ्लोर से वर्कर आ गया. वर्कर बोलता है बोरा की शादी है, वो जॉब का पेपर दो. स्टोर्स में पेपर पड़ा हुआ है, इंक है, जो भी प्रोडक्शन के लिए मटेरियल लगता है. वर्कर्स कम एंड डिमांड. वर्कर टेल मी जॉब नंबर, तो उन्होंने जॉब नंबर बोल दिया. मैंने क्या एंट्री पास किया? आई डोंट एक्चुअली, ये जो एंट्री होते हैं ना, नो इंडिविजुअल पासेस दिस एंट्रीज. दिस एंट्रीज आर ऑटोमेटेड इन रियल लाइफ. सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑटोमेटिकली पास दिस एंट्री. दैट इज व्हाट वी डिड. बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इन आईटी. मैं कौन हूं? स्टोर्स मैनेजर. मैं मटेरियल इशू करता हूं. मैं एंट्री पास करता हूं. जॉब नंबर सो एंड सो के लिए 120 जीएसएम के 30 रिम इशू किए. पेपर इज मेजर्ड इन रिम. तो 30 रिम्स आर इशूड टू जॉब नंबर 120. ऑटोमेटिकली एंट्री पास हो गया. जॉब नंबर समथिंग डेबिट टू स्टोर्स लेजर. बट हम जॉब का अकाउंट नहीं बना रहे. वी आर नॉट ओपनिंग अकाउंट ऑफ ईच जॉब. हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच जॉब? टू जॉब्स. सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द जॉब्स is WIP account. So work in progress account debit. Work in progress account debit. बच्चों, can you see at the back end? WIP के पीछे अगर आप देखोगे तो जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4, ऐसे बहुत सारे जॉब्स दिखाई दे रहे हैं. टू स्टोर्स लेजर. सो एंट्री नंबर 6 क्लियर. एंट्री नंबर 1 क्लियर. लिसन टू दिस. मैं कहां पर हूं? शॉप फ्लोर वाला बंदा आ गया. उसने पेपर मांगा. हम प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहे हैं. उसने पेपर मांगा. मैंने पेपर इशू किया. क्या मटेरियल था वो? डायरेक्ट मटेरियल. आधे घंटे के बाद
प्रिंटिंग का जो मशीन है वो खराब हो गया, तो मशीन पे जो ऑपरेटर है वो आ गया, वो बोलता है वो मशीन का स्पेयर पार्ट दो। वो मशीन का स्पेयर पार्ट है, हिडलबर्ग का मशीन है, उस मशीन का स्पेयर पार्ट दो। मैं बोलता हूं ठीक है, मशीन का स्पेयर पार्ट उठा दो, उसको दे देता हूं। इनडायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज दिस स्पेयर पार्ट इज नॉट गोइंग टू गो टू द बोराज मैरिज, बोराज मैरिज कार्ड। Why that spare part is not for a particular job, it is an indirect material. 7 number नहीं, 8 number, issue of indirect material. Indirect material ये कौन सा टाइप? Indirect material can be used for production, it can be used for sales, it can be used for administration. आधे घंटे के बाद और एक वर्कर आता है, वो बोलता है सर वो इनवॉइस बनाने के लिए स्टेशनरी चाहिए। हेतवी फोन बाजू रख। सो इनवॉइसेस प्रिंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्टेशनरी। स्टेशनरी समझता है? तो मैं स्टेशनरी इशू करता हूं, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। आधे घंटे और एक वर्कर आता है, बोलता सर वो जो हमारा जॉब प्रिंट हुआ ना बोरा के मैरिज का कार्ड, उसको पैक करने के लिए रैपर चाहिए, रैपर इशू करता हूं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों स्टोर्स में जब परचेस हुआ था, ऑल डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मटेरियल, एवरीथिंग केम डाउन टू स्टोर्स। Everything लखा 90 degrees, everything came down to stores. अब स्टोर से इशू कर रहा हूं मैं, इशू 4 चीज के लिए हो सकता है। ऑन योर स्क्रीन, इशू फ्रॉम स्टोर्स कैन बी फॉर अ जॉब, इट कैन बी फॉर प्रोडक्शन, इट कैन बी डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, इट कैन बी डायरेक्ट मटेरियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इट कैन बी इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर marketing purpose. Depending on that, entry will be WIP account debit, FOH account debit, SNDOH account debit, AOH account debit to stores ledger. Entry number 6, entry number 8, credit is common, debit is varying. Are you getting it? So entry number 8, material मैंने क्या किया? Issue किया. Entry number 1, material purchase किया. Entry 7, material issue किया for direct purpose. Sorry, entry 6. Entry 8, material issued for सप्लायर को मटेरियल रिटर्न कर सकता हूं क्या मैं? यू शुड अंडरस्टैंड 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स ऑन योर स्क्रीन। वेयर एम आई? दिस इज रिटर्न टू सप्लायर, नंबर 1। नंबर 2, वेयर एम आई? रिटर्न बैक टू स्टोर्स। दोनों का एंट्री अलग अलग होने वाला है। इफ आई रिटर्न द गुड्स बैक टू सप्लायर, एंट्री विल बी रिवर्सल ऑफ फर्स्ट एंट्री। सो इफ आई रिटर्न द गुड्स बैक टू सप्लायर, entry number 4 is a reversal of entry number 1. GLA 2, stores ledger. Am I right? It will be returned back at the same price at which it was received. Oh, I forgot to tell you wonderful thing. First entry, when you pass, it is passed at landed cost. It is not at a purchase cost. Stores ledger account to GLA. When you purchase a goods, you don't pass this entry at a purchase price. You pass this entry at landed cost. Landed cost is purchase price plus all other incidental costs that you are incurred on procurement. कुछ समझा क्या आपको? All other incidental costs that you are incurred could be freight, could be transit insurance, could be quality checking, could be anything. तो वो सब cost के साथ आपने डेबिट किया है। 90 degrees Mr. Veda. This is not a theater. Purchase of material हमने समझ लिया। रिटर्न ऑफ मटेरियल टू सप्लायर हमने समझ लिया। पेमेंट टू क्रेडिटर, नो एंट्री। व्हाई? बोथ अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट्स। इफ यू वांट टू पास एंट्री, GLA टू GLA, बट यू डोंट हैव Mercedes टुडे। सो नाउ हमने कौन सा विच रिटर्न वी अंडरस्टूड बच्चों? स्टोर्स बैक टू सप्लायर। Entry number 9 and 10 is written by shop floor to stores ledger. Entry क्या होगा? Entry will be reversal of entry number 8. देखो, stores ledger account debit to WIP account. To WIP account when? If it is a return of direct material. If it is a return of indirect material, stores ledger to FOH or to SNDOH to admin overheads. समझा आपको? हमने क्या क्या समझ लिया बच्चों? Purchase, इशू, रिटर्न्स, पेमेंट। समझ गया? ऑब्जर्व। वेयर एम आई? परचेस हो गया, इशू हो गया। आई इशूड मटेरियल टू अ
जॉब नंबर 230, जॉब 230 को ये मटेरियल एक्सेस में हो गया. Job 230 finds this material to be in excess of requirement. Job 230, instead of returning it back to stores, it transfers it to job 235. What should be journal entry? There should be journal entry job 235 debit to job 230, but हम यहाँ पे syllabus में no entry करेंगे. क्यों no entry करेंगे? No entry करेंगे because we are not having account of each job. We are having only representative account. That's why मैंने यहाँ पे लिखा no entry required except internal recording in respective job ledger. So respective job ledger में आपको entry करना पड़ेगा. Job 235 debit to job 230. समझा क्या आपको? ठीक है? I come back. Entry number 2, purchase of material for direct use in a job. मतलब normally material comes to stores and from stores it is issued to job. और हमने डायरेक्ट परचेस कर लिया, वो डायरेक्ट जॉब पे, शॉप फ्लोर पे जाने वाला, डायरेक्ट गाड़ी आ गया, डायरेक्ट शॉप फ्लोर पे गया. क्या एंट्री? WIP अकाउंट डेबिट टू GLA. हैव यू गॉट इट? मैंने डायरेक्ट परचेस कर लिया, बट इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, इट इज फॉर रिपेयर. सो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA. एंट्री नंबर 3, फैक्ट्री ओवरहेड टू GLA, इट इज व्हाट? डायरेक्ट परचेस फॉर रिपेयर्स. एंट्री नंबर 7, मैंने परचेस कर लिया, बट फॉर नॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ फिनिश गुड्स, नॉट फॉर रिपेयर्स, बट फॉर मेकिंग अ फिक्स असेट. आई परचेस अ मटेरियल बट फॉर मेकिंग बिल्डिंग और फॉर मेकिंग मशीनरी. सो इट इज अ कैपिटल ऑर्डर, इट इज नोन एज. सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर्स लेजर. बच्चों, दिस इज नथिंग बट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिक्स असेट. आप मशीन परचेस करते हो, ऐसा जरूरी है कि आप मशीन परचेस करोगे? कैन आई मेक मशीन ऑन माई ओन? To make a machine on my own, I purchase certain raw material. I purchase certain raw material to make a machine. वो raw material डायरेक्ट आ गया, मैंने इशू कर लिया. So एंट्री क्या पास किया मैंने? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर. Have you got it? एंट्री नंबर 12, abnormal लॉस हो गया, मटेरियल का आग लग गया, चोरी हो गया. abnormal loss is to transfer to costing P&L. स्टोर्स लेजर का इन्वेंट्री कम करना है ना, सो एंट्री costing P&L account debit to stores ledger. खत्म. Entry number 1 to 12 was regarding what? Entry number 1 to 12 regarding material. समझ गया आपको? अभी देखो मामा चकर. This is one single chart through which the entire chapter gets covered. But I think हाँ ये ऐसे दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है. ओके, जूम करता हूं. लिसन अप, लिसन अप. This is raw material account. Listen up. I'll share it a PDF of this on Telegram. Don't bother. अरे चुप बैठना, इतना क्या जल्दी है? Just feel it. So listen. Raw material account. बच्चों, मैंने यहाँ पे सबके सब अकाउंट ड्रॉ कर करके. रॉ मटेरियल अकाउंट है, इधर GL है, इधर वेजेस है, उधर फैक्ट्री ओवरहेड है, इधर एडमिन ओवरहेड है, इधर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर WIP है. रॉ मटेरियल अकाउंट. व्हाट डू यू हैव? ओपनिंग रॉ मटेरियल. Opening raw material, then you purchase. When you purchase direct or indirect material, irrespective of what material you purchase, entry remains same. What is the entry? Raw material control account debit to GLA. तो ये यहाँ पे डेबिट आ गया, उसका क्रेडिट ढूंढते कहाँ पे गया? हाँ, मिल गया इधर क्रेडिट. GLA में क्रेडिट गया ना, ये समझ गया आपको. मैं इशू करूंगा मटेरियल. इफ आई इशू डायरेक्ट मटेरियल, इट इज इशूड फॉर प्रोडक्शन पर्पस. सो डायरेक्ट मटेरियल गोज टू हियर. मिल गया आपको? क्या एंट्री पास किया मैंने? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर. Indirect material. Now indirect material can be for production purpose or for admin purpose or for selling and distribution. Depending on that account will be debited. So देखो यहाँ पे चार्ट निकल रहा है.
जा रहा किधर जा रहा है? ये इधर नहीं जाने का, जा रहा जा। सो कहां पर आ गया हो? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, to stores ledger control account or to raw material control account. Have you understood? Madam, आता माझी सटकेला. I'll not care who you are then. So I hope everybody is sincere enough. Those candidates who are not interested, please get lost. This is not an invitation for any general kind of entertainment show here. I respect my work and I expect the same respect from you. If you are not interested, get lost. I don't care. You may be the son of Prime Minister or daughter of Prime Minister. I don't care. Have some respect. So, kind of energy सो रहे हैं वहां पर बिंदास. अगर ऐसे एक डायलॉग बोलूंगा ना तो कभी जिंदगी में वापस सोने की हिम्मत नहीं करोगे कहीं. What entry did I pass? Factory overhead control account debit to stores ledger control. ये कौन सा अकाउंट था? सॉरी कौन सा मटेरियल था? Indirect material. I have not, due to the limited space, I have not transferred it to selling, distribution as well as admin overhead. लेकिन फीलिंग समझ गए आपको? हाँ. Abnormal loss का भी एंट्री पास नहीं किया मैंने क्योंकि कॉस्टिंग पीरियड बहुत दूर था इधर. So, costing P&L account debit to what? Costing P&L account debit to stores ledger. ये अकाउंट समझ के आपको बच्चों? ठीक है. I'll come back to entries. ऐसे फिर वापस वेजेस पे आएंगे और फिर पूरा चार्ट एक साथ देखेंगे हम. वेजेस अभी सिंपल है. देखो, I pay wages. What entry will I pass? Wages control account debit to general ledger adjustment account or to cost ledger adjustment account, not costing P&L. Payment of wages. Observe direct or indirect. Wages control account debit to general ledger adjustment account. ये pay किया wages मैंने. Now out of this something could be direct wages, something could be indirect. Analysis and distribution of wages. Direct wages will go to WIP account. Indirect wages, depending on the purpose, they'll go to factory overhead, admin overhead, selling, distribution. Capital work in progress is debited for what? If you are asked worker on construction of asset. Worker working on in-house construction. Workers are working on in-house construction of what? Asset. आप खुद मशीन बना रहे हो, आप खुद बिल्डिंग बना रहे हो, आप खुद फैक्ट्री बना रहे हो आपके कंपनी के लिए. There can be in-house construction of asset. So WIP account debit, capital work in progress debit, factory overhead debit, admin overhead debit, selling overhead debit to wages control. मतलब wages का अकाउंट बंद हो गया बच्चों, है ना? Then payment of expenses oblique providing of depreciation. These are indirect expenses paid. Indirect expenses मतलब overheads paid. बच्चों overhead incurred is debited. अभी बोला था मैंने सुबह, overhead incurred are debited, but overhead comprise of IM, IL, IE. Indirect material, indirect labor. बच्चों indirect labor ऑलरेडी आ गया ऊपर 13 नंबर एंट्री, सॉरी 40 नंबर एंट्री देखो. Indirect labor ऑलरेडी आ गया ना. क्या एंट्री पास किया आपने? WIP अकाउंट डेबिट, कैपिटल WIP डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट. तो बच्चों ओवरहेड अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या क्या होगा? डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect wages, indirect expenses. So overhead account debit is overheads incurred. Entry क्या पास किया मैंने 15 नंबर का? Payment of expenses for providing depreciation, factory overhead control account debit, admin overhead account debit, selling and distribution overhead account debit to bank. But to bank नहीं आएगा, to GLA आएगा. समझा क्या? To GLA. What is this? This is overhead incurred. Now what? Absorption of overheads. Entry WIP account debit to factory overhead. Overheads are absorbed by a particular job.
सुबह एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने वो ओवरहेड और ये चैप्टर लिंक लगाया. WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड. देयर इज अ लॉट ऑफ लिंकिंग. ये चैप्टर कॉस्ट शीट से लिंक्ड है, ये चैप्टर लिंक्ड है टू ओवरहेड चैप्टर. WIP to factory overhead. This is overhead absorbed. Now there can be difference between the entry number 15 and entry number 16. That is under absorption or over absorption. 17 number मत देखो अभी. Under absorption, over absorption is covered under entry number 24. Under absorption देखो. Under absorption का मतलब क्या है बच्चों? Debit side is overhead incurred. It is bigger than the credit side which is overhead absorbed. So कौन सा बैलेंस है? I can't hear. डेबिट बैलेंस मतलब ओवरहेड अकाउंट मुझे बंद करना है. डेबिट बैलेंस को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा अकाउंट को? क्रेडिट. सो ओवरहेड अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड. वेयर डू आई गिव अ डेबिट? डेबिट कुड गो टू आइदर WIP अकाउंट और फिनिश गुड्स अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और कॉस्टिंग P&L डिपेंडिंग ऑन वेदर द रीजन इज नॉर्मल और abnormal. These things are normal. This is और ये ओवरहेड सस्पेंस इज कैरिंग फॉरवर्ड द ओवरहेड. ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट इज अ टाइम पास. ये लीडिंग एकेडमिशियंस का क्रिएशन है. इफ यू वांट, इफ द अमाउंट ऑफ अंडर अब्सॉर्प्शन इज वेरी इमटेरियल, यू कैरी फॉरवर्ड अंडर अब्सॉर्प्शन ना, डोंट कैरी फॉरवर्ड. इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय बैलेंस विल राइट बाय ओवरहेड सस्पेंस. बाय ओवरहेड सस्पेंस मतलब वी आर नॉट डूइंग analysis of under absorption. We are just carrying forward amount of under absorption from current year to next year. Next year में वापस overhead suspense जो है ना, overhead account on your screen, overhead account by overhead suspense next year to overhead suspense. मतलब जो लिखो ना उधर by balance to balance, instead of by balance to balance we write by overhead suspense. So overhead suspense is nothing but under or over absorption carried. बच्चों ये तीनों एंट्री मैंने यहाँ पे कंबाइन किया. मैंने नोट 3 लिखा है नीचे. नोट 3 एंट्रीज फॉर अंडर absorption. If you want to carry forward, either pass no entry. अरे yes, either pass no entry or respective overhead suspense account debit to respective overhead control account. Am I right? The next year this entry will be, if you want to transfer to costing P&L to respective overhead control account. Use of supplementary rate, that was a method that I discussed in the morning. Then WIP account debit, FG account debit, cost of sales account debit. How do you calculate supplementary rate? Amount of under absorption oblique over absorption divided by equivalent units. I hope everyone calculate equivalent units. I can't hear. So entries for over subscription, just what? Reverse the above entries. In case of over subscription, entries will be reversed. Or absorption. I said what? No. Stock market. So, in case of over absorption, you just reverse the entries. I got it. Concentrate. So, I came down to entry number 15, which was for indirect expenses. Entry number 16, you absorbed factory overhead. Bachcho, important line. Factory overheads are absorbed in WIP. Admin overheads are absorbed in cost of production. Selling and distribution overheads are absorbed in cost of sales. तो अब देखो, this is admin overhead absorption 18 नंबर पे. बट उसके पहले WIP के गुड्स तैयार हो गए. मैं कहां पर हूं अभी? शॉप फ्लोर में गुड्स रेडी हो गया. वो मैं ट्रांसफर करूंगा कहां पर? वेयर हाउस में, फिनिश गुड्स वेयर हाउस में. एंट्री क्या होगा? FG अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट. बट व्हाट आई हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम WIP अकाउंट. WIP अकाउंट में सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट था. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स आर देयर. फैक्ट्री ओवरहेड. WIP अकाउंट में एडमिन ओवरहेड नहीं था, तो मैंने क्या ट्रांसफर किया? फैक्ट्री कॉस्ट. यही तो लिखा है मैंने उधर ब्रैकेट में. ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. FG account debit to WIP account. This entry is passed at what? Factory cost. Then I absorb admin overhead. Admin overhead I am absorbing in finished goods. Entry FG account debit to admin overhead control account. Whenever you absorb any overhead, overhead account will be credited. And wherever you are absorbing, that account will be debited.
Factory overheads were absorbed by WIP. Admin overheads are absorbed in cost of production. Then cost of goods sold. Cost of goods sold मतलब FG account से हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. क्यों? देखो मैं कहां पर हूं अभी? फिनिश गुड्स वेयर हाउस. आई हैड सम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस आई रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम shop floor by way of production minus closing stock is called as what? Cost of goods. That cost of goods sold I will transfer to costing P&L, but instead of costing P&L I am using one time pass account called as what? Cost of sales account. So entry क्या पास किया मैंने? Cost of sales account debit to FG account. समझा आपको? Absorption of selling distribution overhead. Selling distribution overhead का account already हमने बनाया. Every overhead account debit side is overheads. Credit side is overhead. But credit का corresponding debit कहां पे जाएगा? That depends on nature of overhead. Factory overhead का corresponding debit कहां पे जाएगा? WIP. Admin overhead का corresponding debit cost of sales नहीं आता है. That is a cost of finished goods. That is FG account. And selling distribution कहां पर absorb होता है? Cost of sales. हाँ, but there is a double treatment or there is a different treatment possible for admin overhead. इसलिए मैंने admin overhead को क्या लिखा ब्रैकेट में? See note number 1 and note number 2 देखेंगे बाद में. Absorption of selling distribution overhead. बोलो बच्चों entry. Cost of sales account debit to selling distribution. Sales हो गया. Debtor account debit to sales. But debtor हमारे पास है क्या? Debtor की जगह पे कौन है हमारे पास? कौन है? Entry GLA account debit to transfer of cost of sales. Cost of sales, where it is transferred? Costing P&L. Entry, costing P&L to cost of sales. Time pass transfer है ये. Then sales हो गया. Transfer of sales. Sales is transferred to credited to costing P&L. Under absorption बोल दिया. Over absorption reverse. Transfer of capital asset. वो capital asset कभी ना कभी तैयार होगा ना? Entry क्या पार कैसे? Asset account debit to capital work in progress. Where am I right now? Store से मैंने material issue किया. किसके लिए? Asset बनाने के लिए. शॉप फ्लोर के कुछ वर्कर मैंने असेट बनाने के लिए काम करने को बोला उनको. असेट बन गया. Until asset was under the construction, you had used account called as a capital work in. अब वो अकाउंट मुझे बंद करना है और asset account क्रिएट करना है. Once asset is created, entry will be respective asset account debit to capital work in. ये capital work in progress कहां पे आया था आपको मालूम है? CWIP, FM, ROC, return on capital employed. While calculating return on capital employed, we deducted 3 items. Capital work in progress, non-trade investment and loans and advances. ये contract costing में भी आपको CWIP आया था, but वो CWIP पूरा अलग है. That was contract work in progress. This is not a contract work in progress. This is capital asset under progress. So entry क्या पास किया? Respective asset account debit. But asset account हमारे पास है नहीं costing में. तो entry क्या पास किया? GLA account debit to कैपिटल वर्क इन प्रॉफिट. कॉस्टिंग P&L से आप GLA को ट्रांसफर कर सकते हो. दैट इज नथिंग बट P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व इज लाइक अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज पेएबल टू द ओनर. वी डोंट हैव दैट अकाउंट. दैट्स अ GLA, बट इट्स एंट्री इज ऑप्शनल. हैव यू गॉट द फ्लो? एडमिन ओवरहेड का ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. एवरी प्रॉब्लम प्लीज राइट अ नोट. एडमिन ओवरहेड मे बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इन दैट केस एडमिन ओवरहेड मे बी एब्सॉर्ब्ड इन WIP अकाउंट. अभी मैंने कहां पे एब्सॉर्ब किया था रे? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड. यू मे पास एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड. एडमिन ओवरहेड may be treated as a cost of sales. In that case, entry will be cost of sales account debit to admin overheads. Have you got it? Entries for under subscription you understood? Are under absorption you understood? Over absorption you understood, right? So, बच्चों, flow क्या है? Flow is summarized here. Before I proceed, we said costing records are separate, financial records are separate, and we are understanding accounting in costing records. Did I talk about payment of dividend ka journal entry? That entry will be GLA to GLA. We are not concerned with that. We are concerned with only incomes and expenses that too from operations. We are not interested in non-operating income. So you have made investment in some shares or mutual funds. उसके ऊपर आपको कुछ interest मिल गया. I am not concerned. To the hell with it. I am not interested in recording the transaction itself. We are interested only in recording the transactions which are related to cost of production. That is the limited objective of costing.
देखो अभी ये फ्लो देखो, ये पहले कौन सा अकाउंट है? रॉ मटेरियल अकाउंट। इस अकाउंट में आप क्या लिखते हो? डेबिट साइड इज व्हाट? गुड्स परचेस्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस। क्रेडिट साइड इज गुड्स इशूड, बट इशू कहां पे होता है? आइदर डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट को जाएगा, इनडायरेक्ट है तो रिस्पेक्टिव ओवरहेड को जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। समझा आपको? अकाउंट आउट। वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट साइड पे देयर कैन नॉट बी ओपनिंग बैलेंस टू वेजेस। आप बोलेंगे सर रह सकते हैं ना, दैट इज प्रीपेड वेजेस, दैट अकाउंट इज डिफरेंट अकाउंट। कॉस्टिंग में हमें प्रीपेड वेजेस का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? प्रीपेड वेजेस इज असेट, वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड वेजेस इज डिफरेंट। सो आप बोलेंगे सर लेकिन आता था कभी कभी प्रीपेड वेजेस, वो आ गया होगा इफ देयर वाज अ इंटीग्रेटेड अकाउंट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इफ देयर वाज अ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट यू विल नॉट हैव प्रीपेड वेजेस। सो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में प्रीपेड वेजेस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? प्रीपेड वेजेस असेट है ना। एम आई कंसर्न विद असेट? फिर अगर आप प्रीपेड वेजेस लेते हो फिर शेयर कैपिटल भी लो, जनरल रिजर्व भी लो, प्रपोज डिविडेंड भी लो। नो, हमें नहीं चाहिए। वेजेस डेबिट साइड क्या है? वेजेस पेड। क्रेडिट साइड इज वेजेस अब्सॉर्ब। वेजेस कौन से अब्सॉर्ब होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस आर अब्सॉर्ब बाय WIP, इनडायरेक्ट वेजेस गो टू रिस्पेक्टिव ओवरहेड। देखो IW कहां पे गया, दिखाई दे रहा है आपको? एरो। देन कम डाउन टू दिस ब्यूटीफुल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। डेबिट साइड पे क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों ये सब कुछ मिला के क्या बोलते हैं हम इसको? Overheads incurred can be in the form of indirect material, indirect wages, indirect expenses. Then overheads are absorbed. Hey, can this account have balance? Yes. This balance is under or over absorption carried forward from previous year or carried forward to subsequent year. Absorbed in WIP. देखो कहां पे गया वो, जाओ ऊपर जाओ, दिखाई दे रहा है? देखो WIP में क्या आ गया? ओपनिंग WIP था, फिजिकल स्टॉक जो रहेगा वो तो रहेगा ना। Add direct material, add direct wages, add what? Factory overhead. बच्चों नथिंग बट प्राइम कॉस्ट। ये जो था प्राइम कॉस्ट था। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस का अकाउंट भी आएगा, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया मैंने। ऑब्जर्व करना, ये कॉस्ट शीट ही है। देखो ओपनिंग WIP, add direct material, add direct wages, add FOH, less closing WIP is nothing but factory cost. आप कॉस्ट शीट में क्या लिखते थे? पहले ओपनिंग WIP बाद में लिखते थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड और ओपनिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP, देयरफॉर फैक्ट्री कॉस्ट। यही चीज लिख रहा हूं मैं। ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड देन द क्लोजिंग WIP। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कहां पे जाएगा बच्चों? अरे ये कहां पे जाएगा? FG। देखो कहां पे जा रहे हो, जा रहा है FG अकाउंट में आ गए हम। FG अकाउंट, ओपनिंग FG है, फैक्ट्री कॉस्ट है, एडमिन ओवरहेड्स है। एडमिन ओवरहेड वहां कहां से आ गए? दिस आर एडमिन ओवरहेड एब्सॉर्ब। आ गया COGS आ गया यहां पर। क्लोजिंग FG, COGS कहां पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। जाओ जाओ गया उधर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में COGS आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी आ गया। फ्रॉम देयर आई विल ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग P&L। डू यू अंडरस्टैंड? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग P&L। बहुत दूर का रास्ता है। Look at costing P&L. Cost of sales आ गया, abnormal items. Now what is this abnormal items? Under absorption, over absorption credit पाएगा, under absorption, abnormal loss of material, abnormal idle time. All the abnormal items will come to costing P&L. Sales credit हो गया, profit यहाँ पर आ गया। Have you understood this? Yes, no? Good. Costing P&L, sales आ गया वहां से, तो चेक करो सब अकाउंट सिखाया क्या मैंने। रॉ मटेरियल अकाउंट सिखाया, वेजेस सिखाया, FOH सिखाया, एडमिन ओवरहेड्स नहीं सिखाया था। एडमिन ओवरहेड में भी सेम चीज आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट
expenses. Absorbed in what? Finished goods. Selling, distribution, indirect material, indirect expenses, indirect wages. Absorbed in cost of. ये अकाउंट सिखाया, FG सिखाया, कॉस्ट ऑफ सेल सिखाया, सेल्स सिखाया, जनरल लेजर एडजस्टमेंट सिखाया, and then you can prepare a trial balance, and trial balance should be able to tally on its. Have you got it? ये कौन सा मामा चक्कर था? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम. और एक मामा चक्कर है इंटीग्रेटेड सिस्टम. बट बिफोर दैट एंट्री. बच्चों, integrated system is very easy. One line, integrated system is over. In non-integrated system, we had general ledger adjustment account. That general ledger adjustment account I am going to just replace by respective personal account or respective रियल अकाउंट. मैं रिप्लेस करने वाला हूं सिर्फ. फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑफ मटेरियल. देखो, स्टोर्स लेजर टू जनरल लेजर था. स्टोर्स लेजर टू क्रेडिटर और कैश आ गया. WIP टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्या किया मैंने? WIP टू क्रेडिटर कर दिया. कुछ समझा क्या? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू GLA क्या कर दिया मैंने? टू क्रेडिटर टू कैश. बच्चों, वेदर यू फॉलो इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, कॉस्टिंग पीरियड का जो प्रॉफिट है वो सेम रहेगा. सब कुछ सेम रहेगा. सिर्फ फर्क क्या है? इंस्टेड ऑफ हैविंग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यू हैव रिस्पेक्टिव डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, असेट अकाउंट्स. आर यू क्लियर ऑन दैट? डायरेक्ट मामा चक्कर देखो तो खेलने का. देखो ये, हाँ, यहां पे थोड़े अकाउंट ज्यादा है. वाई आर अकाउंट्स मोर? कैसे दिखाऊं अभी? Are you able to see this? Anything? You get a feeling of it from the non-integrated system. समझ गया आपको feeling? Yes, you understood. So, if you see type number 1 problems on page number something something, I kept majority of the problems which are not there in the notes which are there with you. I tried to take some different problems. You should solve these problems. It will give you an additional practice. I'll say now when you have to revise a particular chapter, आप पहले class notes करो. क्लास में आपने जो भी किया उसका क्विक रीडिंग करो rather than solving, because you can solve these sums, some different sums. So you can go through all the sums, all the concepts that you have done in the class at that point of time, and then you can solve these sums. Around 20% at the most should have been already covered in the class. 80% नहीं होगा. Standard marginal में तो 100% sums will be completely new. Sums मैंने create किए हुए हैं. So वो तो कहीं आएंगे नहीं. एग्जाम वाले बहुत कम है उसमें. So type 1 अगर आप देखोगे पेज नंबर 44 पे, it is non-integral accounting that we did. Type 2 is integrated system of accounting we did. Type 3, expect that for the exam. Type 3 it's a recurring type. Type 3 के अंदर बहुत सारे सब टाइप्स किए मैंने. Listen to the subtypes. Type 3 is about reconciliation. Why do you need reconciliation? Reconciliation is required only in case of non-integrated system of accounting. Reconciliation is not required in case of integrated system of accounting. Do you understand? What do you mean by reconciliation? Profit as per costing books and profit as per financial books are not same. Before I proceed, I'd like to give some background for reconciliation. प्लस माइनस साइन डिसाइड करने का लॉजिक बोलता हूं.
I'll co-link it with what we did in the CPT DRS chapter. बैल बैल बाद में, पहले वो बैल बैल मैकेनिकल हो जाएगा, पहले लॉजिक एक्सप्लेन कर दे दो. I expect complete silence and concentration. Listen up carefully. So, here is a costing P&L which shows net profit. Here is a P&L which also shows certain amount of net profit. Amount here is X, amount here is Y. पता है क्या आपको ये सब? एक्सप्लेन नहीं करूं? This X and Y are different. Before you prepare a statement showing the differences between X and Y, it is very important that you actually understand what could be the differences between the two. अगर आप differences समझ लेते हो ना, तो reconciliation statement present करना बहुत easy जाता है. So I'll put up differences here. Reasons of differences between costing books and financial books. There are reasons of differences between costing books and financial books. Let me put all those differences into three categories. What are the three categories that I am putting up here? Listen carefully. Transactions recorded in financial books but not in costing books. There are some transactions which are recorded in one book but not in another book. For example, interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल बुक्स में होता है, लेकिन कॉस्टिंग में इंटरेस्ट ऑन लोन आता है क्या रे? नहीं आता है. इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कम्स अप इन फाइनेंशियल बुक्स बट प्रोविजन फॉर टैक्स डज नॉट कम अप इन कॉस्टिंग बुक्स. डू यू एग्री? यस, यू हैव टू. इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे रहता है बच्चों? ये P&L में रहता है, लेकिन कॉस्टिंग में रहता है क्या? नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है? नहीं रहता है. As simple as it. Simple. Next category. Transactions recorded in what? Transactions recorded in costing books but not in फाइनेंशियल बुक्स. ऐसा होता है क्या? कॉस्टिंग में ट्रांजैक्शन है लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में वो ट्रांजैक्शन नहीं है. कैन दिस हैपन? यस, नो? हाउ डज इट हैपन? इट हैपन्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देयर कैन बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट recorded in the costing books but that cost is not recorded in financial books.
And the last category of difference is recorded in both the books, but amount is different. You are recorded a transaction in both the books, but the amount that you are recorded is different. In one book, it is a different amount. In another book, there is a different amount. For example, depreciation. Costing में आपने मशीनर रेट मेथड फॉलो किया है. In financials, you have followed straight line method. Inventory valuation में फर्क हो सकता है दोनों मेथड में. कॉस्टिंग बुक्स में अलग हो सकता है, वहां पर अलग हो सकता है. ओवरहेड्स में डिफरेंस हो सकता है बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरहेड पेड आप लिखते हो, वहां पर कॉस्टिंग में आपने ओवरहेड एब्सॉर्ब लिया होगा. प्लीज रिमेंबर, if under or over absorption is transferred to costing P&L, there won't be any difference. For overhead, नहीं समझो. ये क्या है? P&L में क्या रहता है? Overhead incurred. P&L में सिर्फ overhead incurred रहता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो absorbed वगैरह कुछ आता नहीं. इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो वो अलग है. डेबिट साइड ऑफ P&L इज व्हाट? ओवरहेड इंकर्ड. बट बच्चों, कॉस्टिंग P&L में अगर आपने यहां पर ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड ही लिखा तो बच्चों यूए और ओए विल कम इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. यूए ओए विल कम इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड इंकर्ड एंड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड. डू यू अग्री? But if I say UA is also debited here, UA plus overhead absorbed is nothing but overhead incurred. But if there is a over absorption, bye. I can take OA there. If I take OA on a credit, overhead absorbed debited and OA credited is as good as overhead incurred debited. Moral of the story: if under or over absorption is debited to costing P&L, then there will be no difference between financial accounting and cost accounting for overheads. With respect to overhead, लिखो उधर headline. If there will be no difference between costing books and financial books. There will be no difference between costing books and financial books with respect to overheads. I hope you got it. अभी रिकंसिलिएशन में आपको जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं. बट वी विल नॉट गो टू द प्रॉब्लम्स. आई विल एक्सप्लेन समथिंग मोर. ये डिफरेंसेस समझा आपको बच्चों? हैव यू अंडरस्टूड डिफरेंसेस? यस. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस, देन understand something else also. Before you decide science, you have to learn steps in reconciliation. अगर आपको reconciliation करना है तो आपने क्या steps follow करना है? Step number 1,
आइडेंटिफाई डिफरेंसेस, ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन किया. डिसाइड स्टार्टिंग पॉइंट. व्हाट कुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों? What could be the starting point? Starting point can be either financial books or costing books. Anything can be your starting point. Choice is completely available to you. चलो आपने starting point डिसाइड कर लिया. Decide sign for every item of difference. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे करना है. Present statement and arrive at profit as per end point. And arrive at what? Profit as per end point. So you arrive at a profit as per end point after doing plus minus plus minus. अब हमें क्या डिसाइड करना है? आपको आइडेंटिफाई डिफरेंसेस मैंने एक्सप्लेन किया. डिसाइड स्टार्टिंग पॉइंट, आइदर कॉस्टिंग बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स, जो भी आपको पसंद है वो ले लो. ये साइन कैसे डिसाइड करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन. टू एक्सप्लेन दैट, if you have understood BRS chapter properly in CPT, I would like to draw analogy from BRS chapter. BRS and ये costing reconciliation. Listen to this. In BRS हम लोग बोलते थे deposit और withdrawal. Deposit withdrawal क्या हुआ करते थे बच्चों? Transaction. There could be either deposit or a withdrawal from bank account. याद है क्या? कॉस्टिंग में वो होता है इनकम और एक्सपेंस. Instead of deposit withdrawal, we are talking about income or expense. In BRS chapter, you used to have balance or you used to have overdraft. In costing chapter, you are going to have either profit or loss. There is going to be either a profit or there is going to be a loss. कुछ समझा क्या आपको? There is going to be either profit or loss. So these are the words that I am going to replace. So let me give an example of how to decide a sign. I'll explain orally. To decide a sign, assume that costing books and financial books both show same amount of profit or same amount of loss. Assume that both are showing same profit or same loss. आप बोले कि सर प्रॉफिट ले या लॉस ले? Depends on starting point. If your starting point was profit, assume same profit in both the books. If your starting point was loss, assume same loss in both the books. Do you get my point? If starting point was profit, assume both the books show profit. If starting point was loss, assume both the books show loss. Are you clear on this? Then you record the transaction of difference in costing books or financial books as per the details that are given in the question. ऐसा होता है कि एक ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग में रिकॉर्डेड है लेकिन फाइनेंशियल्स में नहीं है, फाइनेंशियल्स में है लेकिन कॉस्टिंग में नहीं है. एंड देन सी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस. लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट है. कॉस्टिंग बुक शो अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35,000. फाइनेंशियल बुक्स
show a profit of ₹75,000. बच्चों, what could be starting point? Anything? और मैं आपको आइटम देता हूं, डेप्रिसिएशन इन कॉस्टिंग 13,000, डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 17,000. तो आपको साइन डिसाइड करना है, कहां से शुरू कर सकते हो आप, कॉस्टिंग या फाइनेंशियल्स, कहां से भी शुरू करो. मैं कॉस्टिंग से शुरू करता हूं. ऑन योर स्क्रीन, कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, प्रॉफिट. बैल नहीं करना है. कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट. Assume both the books show same profit. Step 1. Step 2. Record the transaction. Now, transaction क्या है? Depreciation. Depreciation, is it item of income or is it item of expense? Expense. Expense की वजह से profit बढ़ता है या कम होता है? Financial costing profit, financial profit, profit. Costing profit comes down by 13,000. Financial profit comes down by 17,000. You are going from costing to financial, less. You are going from financials to costing, add. Depending on starting point, आपका साइन वेरी होगा. कितना होगा? 4,000. ये बहुत इजी आइटम था. कितना? 4,000 आएगा, राइट? Do not forget that opening stock is item of expense, closing stock is item of income. Let's say मैं बोलता हूं डेप्रिसिएशन की जगह पे मैं यहां पे लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग 13,000 है, ओपनिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 17,000 है. क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ये सेम राइट साइन रहेगा ना. कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, प्रॉफिट. कॉस्टिंग में 13,000 कम होगा, फाइनेंशियल्स में 17,000 कम होगा. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल टू कॉस्टिंग, एड 4,000. कहानी में ट्विस्ट करो. लेट्स से कॉस्टिंग का प्रॉफिट 35,000 है, फाइनेंशियल बुक्स में लॉस है 75,000 का. आप ओपनिंग स्टॉक ये करते हो. अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉस्टिंग, यू विल डू प्रॉफिट. इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज फाइनेंशियल बुक्स, यू विल डू लॉस. चलो हम कॉस्टिंग बुक्स के हिसाब से देखते हैं. लेट मी नॉट टेक ओपनिंग स्टॉक, लेट मी टेक अ डेप्रिसिएशन. कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन कितना है? फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना है? कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट. लेकिन आप बोलोगे सर फाइनेंशियल में प्रॉफिट है नहीं. अज्यूम है ना. कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट. एक्सपेंडिचर है, ये 13,000 से कम होगा, ये 17,000 से कम होगा. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम कॉस्टिंग टू फाइनेंशियल, लेस. फाइनेंशियल टू कॉस्टिंग. अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज करता हूं. स्टार्टिंग पॉइंट इज फाइनेंशियल बुक्स. कॉस्टिंग लॉस, फाइनेंशियल लॉस. कॉस्टिंग 13,000 का एक्सपेंडिचर है, लॉस गोज अप. ड्यू टू एक्सपेंडिचर लॉस गोज अप. फाइनेंशियल्स डेप्रिसिएशन 17,000 है, लॉस गोज अप. मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, इन फाइनेंशियल लॉस इज मोर देन द कॉस्टिंग बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर इज मोर. तो बच्चों ये हाथ के ऊपर नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? सिंपल लॉजिक. अभी आईपीसी में आ गए, बड़े हो गए आप. Logic that you should remember: expenditure reduces profit, expenditure increases loss. Income increases profit, reduces loss. तो अब ये आइटम डेप्रिसिएशन जो है, ये काय का आइटम है? एक्सपेंस का आइटम है. कहां पर ज्यादा एक्सपेंडिचर है? फाइनेंशियल. सो इन फाइनेंशियल्स लॉस विल बी मोर और प्रॉफिट विल बी लेसर. तो कॉस्टिंग से फाइनेंशियल जा रहे हो तो लेस, फाइनेंशियल से कॉस्टिंग जा रहे हो तो ऐड. डिपेंडिंग ऑन स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट वेरी होगा, आपका आंसर वेरी होगा. समझा आपको? वन मोर पॉइंट.
If your starting point is profit, does not necessarily mean your end point is also going to be profit. How do you do it? Observe. Assume sign of starting point. Assume sign of starting point as पॉजिटिव, irrespective of वो प्रॉफिट है लॉस है. स्टार्टिंग पॉइंट को क्या अज्यूम करोगे आप? पॉजिटिव. टू दैट यू एड सर्टन थिंग्स, फ्रॉम दैट यू डिडक्ट सर्टन थिंग्स. जो एंड पॉइंट आएगा ना बच्चों, अरे बच्चों एंड पॉइंट क्या हो सकता है? प्लस. और अगर ये प्लस है इट मीन्स प्रॉफिट नहीं रहे. कौन बोला प्रॉफिट? प्लस मतलब illiteracy. If this is plus, it means nature of end point is same as starting point. If it is a minus, nature of end point is opposite. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. Nature of end point will be opposite of starting point. मतलब starting point profit था, end point loss होगा. Starting point loss था, end point will be profit. If sign is negative. Negative sign does not mean loss. Starting point loss हो या profit हो, हम उसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे. अब बोलोगे हाउ कैन यू राइट लॉस टू बी पॉजिटिव? अरे यहां पे लिखना लॉस एज पर कॉस्टिंग बुक्स. पॉजिटिव 13,000 लॉस लिखा ना उधर. कुछ समझा क्या आपको? ना आपको प्रॉब्लम क्या क्या टाइप किया सकते हैं. देखो 3 के अंदर मैंने 4 टाइप किए. टाइप 3A, पेज नंबर 46. प्रिपरेशन ऑफ P&L, कॉस्टिंग P&L एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. P&L भी बनाओ, कॉस्टिंग P&L भी बनाओ, रिकंसिलिएशन भी बनाओ, तीनों बनाओ. फिर टाइप 2B, 3B, P&L is given, prepare costing P&L and then prepare reconciliation. Type 3C, reconciliation is given, prepare P&L और costing P&L. ऑलरेडी आपको रिकंसिलिएशन देख रहेगा, आप कॉस्टिंग P&L या P&L बनाओ दोनों में से. टाइप 3D, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट. मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग अ स्टेटमेंट यू प्रेजेंट अ लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट मतलब मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट लिख के रखो. इट इज नॉट मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट. ये लेजर अकाउंट नहीं है बच्चों, इट्स जस्ट अ फॉर्मेट. मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट. Starting point you write here on debit side. Starting point आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, कॉस्टिंग हो, P&L हो, कुछ भी हो, you will write it on what side? Debit side. All add items are here. All less items are here. अरे do you understand all add items, all less items? I can't hear. अब ये अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड. इट मींस एंड पॉइंट विल बी हियर. एंड पॉइंट बट सेम नेचर रहेगा यहां पर, क्योंकि साइन पॉजिटिव आएगा उसका. साइन विल बी पॉजिटिव ना. End point will be here. It will be opposite nature if end point comes up here. What do you mean by this? अगर आपका starting point will always be debit, starting point will be always debit. ये किया है क्या आपने? Starting point will be always have a debit. This is just a presentation. Instead of presenting इन स्टेटमेंट फॉर्म, आपको अकाउंट फॉर्म में पढ़ना होता है, अकाउंट फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है. देखो लास्ट लाइन पढ़ो, पेज नंबर 51 पे लास्ट लाइन पढ़ो. मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, अकाउंट, और गलती से आपने स्टेटमेंट बनाया ना, 0 मार्क मिलेगा आउट ऑफ 8 इवन दो योर आंसर इज करेक्ट. बिकॉज एग्जामिनर ने आपको अकाउंट बोला तो अकाउंट बनाओ, स्टेटमेंट बोला स्टेटमेंट बनाओ. इफ ही सेज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देन यू राइट एड लेस नॉर्मल. अकाउंट बोला तो ऐसे लिखने का.
एग्जामिनर करता है ऐसा, गेम करता है, जैसे चीटिंग, बट हम कुछ नहीं कर सकते। चलो ये अकाउंट एक सॉल्व करते हैं, हम एक सम 11 नंबर सम सॉल्व करते हैं। ये अकाउंट नहीं किया होगा ना आपने, या याद नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत। 11 नंबर हम प्रेजेंट करते हैं, चलो यहाँ पर लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। You have done this, so we'll be able to do it quickly. Page number 51, sum number 11. A manufacturing company disclose a loss of 3,47,000 as per cost accounts. Costing के हिसाब से लॉस है। फाइनेंशियल अकाउंट हाउएवर डिस्क्लोज द लॉस ऑफ 5,10,000, तो दोनों जगह पे लॉस है, तो आप कहां से भी शुरू कर सकते हैं, लॉस ही होगा बच्चों। अगर एक जगह पे लॉस एक जगह पे प्रॉफिट है, तो दोनों में से एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करना है। वो क्या हो सकता है? इट कुड बी कॉस्टिंग, इट कुड बी फाइनेंशियल्स, इट कैन बी एनीथिंग। Following information was revealed as a result of scrutiny of the figures of both the sets of account. Factory overhead under absorbed. Take a pause. Starting point में क्या लेने वाला हूं? Costing. तो प्रेजेंट करते हैं, चलो। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। टू बाय लिखने की जरूरत नहीं है, आई से लॉस एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। लॉस एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स 3,47,000। समझा आपको ये? अभी हमें सिर्फ साइन डिसाइड करना है। I will not write the items in great detail. We'll first understand sign. Factory overhead under absorbed 40,000. Under absorbed मतलब क्या है? Absorbed overhead are lesser. Please remember, under absorption comes in reconciliation only if you are not transferring it to costing P&L. So circle that 40,000 और वहां पे लिखो, this is coming in reconciliation, which means that it is not transferred to costing P&L. Which is not transferred to what? Costing P&L. 40,000 है ना, मतलब absorbed overhead are lesser. अंडर है, ओवर absorbed है। कॉस्टिंग में 40,000 खर्चा कम है। अरे समझ रहा है क्या? कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर कम है, मतलब लॉस भी कॉस्टिंग में कम है। हम कहां से कहां जा रहे हैं? कॉस्टिंग टू फाइनेंशियल। सो कॉस्टिंग का लॉस इज लेसर देन द फाइनेंशियल्स का लॉस। तो हम क्या करेंगे? ऐड। कितना ऐड करेंगे? 40,000। सो डेबिट साइड FOH अंडर अब्सॉर्प्शन 40,000। एडमिन ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब, मतलब कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इफ कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो कॉस्टिंग में लॉस ज्यादा होगा। कॉस्टिंग के लॉस से हम फाइनेंशियल का लॉस कर रहे हैं, लेस। और दिमाग लगाते जाओ, यूए अगर डेबिट पे आया तो ओए क्रेडिट पे आना चाहिए। Depreciation charge in financial account. Oh, this is not item of difference. Difference will be difference of depreciation. Accounts में depreciation 325 है, लेकिन costing में depreciation 275 है। मतलब depreciation कहां पे ज्यादा है? Accounts में expenditure ज्यादा है, मतलब account में loss ज्यादा है। Account में loss ज्यादा मतलब costing में loss कम है। Lower loss to higher loss. Add difference 50,000। अरे
Wonderful. Interest on investment not included in the cost account, 96,000. Interest on investment how much? 96,000. ये कहां पर है? Income है. This income is there in only in financial accounting. Income is there in the financial accounting. मतलब in financial accounting you have lesser loss. Lesser loss मतलब financial accounting में loss is lesser. We are going from costing. Costing में loss is higher. Higher loss to lower loss less. Less मतलब credit side. Interest on investment. कितना अमाउंट है? 96,000. Income tax provided. कहां पर है income tax? Financials में. It is expenditure. It is there in the financials. Loss is more in the financials. Costing में loss कम है. So you are going from costing to financials. Add income tax. कितना है? 54,000. Interest on loan fund same आएगा रे. Interest 2,45,000 अरे. It's same as income tax, no change. Transfer fee credit in the financial books. It's a income. So financial books में आपका loss कम है. In financial books there is a income, मतलब there is a lesser loss. If there is a lesser loss in the financial books, you are going from costing to financials less. क्या है वो? Transfer fee. कुछ तो transfer fee होगा. क्या करना है आप? 24,000. Stores adjustment credit in the financial books. Same thing. Stores का कुछ तो adjustment है. 14,000. Dividend received same. So it's a income. So loss is lesser in the financials. 32,000. Now बच्चों आप balance निकालो. 5,10,000. Debit आ रहा है ना? Debit balance मतलब nature is same. Nature से मतलब loss as per फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कितना लॉस है? 5,10,000. समझा कि आपको 5,10,000? डाउट है किसी को? सो हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर? So it is nothing but a cost sheet that we presented in a different format. Are you clear? Yes, no?